which is rural consumers are facing nowadays. Before that, in earlier class, we discussed about characteristics of rural market and how to influence the characteristic of consumers' behavior in rural market and what are the impacts or factors which are going to influence the rural consumers. So, in short, I just want to tell you all, there are three kind of category of rural consumers in the rural market. What are these categories? First of all, you all know that the mostly rural consumers are dependent on the farming or agriculture, right? That is the truth. But there are some farmers who are under the affluent group. And who are they? Firstly, there are three kind of group: affluent, middle, and the poor. There are three kind of group: affluent group, middle group, and the third one is the poor group. Who are coming under the affluent group? The affluent group are in affluent group. Those farmers will come who are basically doing farming in Punjab and Karnataka. In Punjab and Karnataka, the farmers comes under the affluent group. Why they are coming under the affluent group? Because after the Green Revolution, you all know that the Green Revolution started by Punjab and Haryana, right? So the farmers know the basic modern techniques, how to use modern techniques to do a efficient farming. That's why basically they are comes under the affluent group. But what do you think, that they are in the majority number? No. They are very little and scattered. That's why, because of this reason, the marketers are not feeling that they have basically the target group for the so many companies. फिर से मैं समझाती हूँ. सबसे पहले रूरल मार्केटिंग में हमने तीन ग्रुप पढ़ा कंज्यूमर्स के बारे में. सबसे पहला जो ग्रुप है एफ्लुएंट ग्रुप. एफ्लुएंट ग्रुप वो ग्रुप है जिनका परचेजिंग पावर स्ट्रांग होता है और ज्यादातर वो जो ग्रुप है वो कहां पर लोकेटेड है? वो है पंजाब में और आंध्र प्रदेश में. पंजाब के फार्मर्स क्यों एफ्लुएंट ग्रुप में आते हैं? क्योंकि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से ही वो टेक्निकली एडवांस एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली इन्वॉल्व हो गए. क्लियर है? सेकेंड, आंध्र प्रदेश में जो राइस फार्मर्स है वो भी बेसिकली किसके अंडर में आते हैं? एफ्लुएंट ग्रुप में आते हैं. ठीक है, लेकिन इनकी जो संख्या है यानी इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है. इसलिए मार्केटर को लगता है या कंपनीज को लगता है कि टोटल पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन पे ही टारगेट करना हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है क्योंकि इनके नंबर्स क्या है? बहुत कम. सेकेंड ग्रुप आता है मिडिल ग्रुप. उनकी वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में बोल सकते हैं एफ्लुएंट ग्रुप के बाद जो नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा किसका है? बेसिकली मिडिल ग्रुप का. ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर बहुत मिडिल रहती है. बेसिकली वो सीजनल फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं. उनका परचेजिंग पावर एज सच नॉर्मल बेस्ड उनकी लाइफ होती है. लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एज सच एफ्लुएंट ग्रुप जितना नहीं होता है, फिर भी उनकी परचेजिंग पावर जो होती है वो ठीक ठाक होती है. मेजॉरिटी नॉर्मल होती है. बेसिकली इस ग्रुप में कौन आएंगे? यूपी के बेसिकली फार्मर्स जो शुगर के प्रोडक्शन में क्या है? इन्वॉल्व. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट अबाउट इट. एफ्लुएंट ग्रुप, हु कम्स अंडर द एफ्लुएंट ग्रुप? पंजाब एंड आंध्र प्रदेश फार्मर्स. ओके, wheat, just write wheat farmer of Punjab, wheat farmers of Punjab and rice farmers of Karnataka. They comes under affluent group. Affluent group का मतलब होता है जिनकी परचेजिंग पावर हाई होती है. कह सकते हैं रिच जो फार्मर्स होते हैं, लेकिन फिर भी मार्केटर इनको पोटेंशियल नहीं मानता है. रीजन मैंने बताया, why they are not thinking they are potential, why they are not thinking it we can target on them, because they are in very few numbers. Clear? Rice farmers from Karnataka, wheat farmers from Punjab. And the second one is middle group. We can say they are moderate level group in which the earning power is normal, living of standard is normal. Why you are not writing? I will listen and I will write it. You just present it.
in this group, in middle group, we can say who will come? The UP farmers who are basically involved in sugarcane production. Sugarcane production में जो UP farmers जो involved है वो middle class group में कह सकते हैं आते हैं. उनका जो basically purchasing power है that is normal. They are basically depend upon the seasonal products पे भी ज़्यादातर dependent होते हैं. But उनकी जो purchasing power है moderate है, normal living standard. In last class, I think I taught you about the consumer behaviors in rural market, right? Yes. What I taught you? Abhijit, stand up. Tell me. In last class, we discussed about the rural consumers characteristic. What was that? I also told you about the rural consumers characteristic now. Yeah. That they are uneducated, they are basically thinking about the local languages. I told you all now. Yes, ma'am. Types of consumer. Tell me. Tell me what was that? Anyone? What we discussed in the last class? Types of customer. And what are the correct types of consumer, like loyal customer, then after impulsive customer. Third one is Wandering, needless. Wandering, I just normally told you that how many types of customers are present in India. Then after that we discussed about the rural consumers, right? rural consumer characteristics. Unemployment, that means they also want to expand their business by using bar method. That's all. How to influence the customers? Yes. We discussed about that. So, good. Okay. So the third category is the poor category. Who are coming under the poor category? Basically, the farmers of UP and Bihar basically comes under this category. Their purchasing power is less. They are not as such aware, right? They are not aware about the different kinds of products, brands. Their purchasing power is not as such high. So they are basically dependent upon the very small products, small size products, small packaging, less amount, right? So who comes under this category? कौन इसके अंदर आता है? Basically UP और बिहार के farmers. ठीक है? Rural consumers basically 50% जो आपके rural consumer है वो किस पे dependent है? Farming पे. ठीक है? किस पे dependent है? Farming पे. Farmers. Basically कौन है वो? Farmers है ज़्यादातर irrigation. Basically किस पे dependent है? Farming पे. तो सबको पता है. Now अब क्या क्या problem है? What is the problem in the rural market? What are the basic problem in the rural market? Anyone can tell me any point that what is the basic problem there? Anyone have any idea? Ever you went to your village? Village गए हो, गांव गए हो, problems देखा है? Unawareness now. Very much unawareness, illiteracy, right? Poverty. Okay. So first, we all know these are the basically reasons, and these are the basically lack in the rural market. लेकिन सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला आएगा transportation. Why we are considering transportation as a problem? Because in so many villages, it's around 6,64,000 villages are present in India. Majority of villages have no proper transportation system. Why? Because of the lack of infrastructure like road. ठीक है, रोड की सिचुएशन इतनी बुरी है कि कभी बारिश हो गई ज्यादा तो वो कच्चा रोड बहुत ज्यादा आपको वहां पर दिखेगा. पतली पतली गलियां देखेंगे, प्रॉपर रोड्स नहीं दिखेंगे. बारिश के टाइम पे इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू कंपनीज टू रिच टू दोस प्लेसेस, राइट, इन रिमोट एरियाज बेसिकली. सो ट्रांसपोर्टेशन इज द आल्सो अ मेजर रीजन, बहुत बड़ा रीजन है रूरल बैकवर्डनेस का, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द कच्चा रोड, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. रोड ही नहीं रहेगा तो सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे? अभी आपको पता होगा कि इन सो मेनी विलेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स, मे बी इन सम डिस्ट्रिक्ट्स देयर आर द ऑनलाइन सर्विसेज आर अवेलेबल, but in the very remote areas of villages they are even not able to go. Why? Because of these reasons,
राइट? पहला क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन रूरल एरियाज, राइट? अच्छा, आप ये सब छोड़ो, जस्ट आई एम जस्ट नॉर्मली आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन. Whenever you been to your village, ever you think that there is a lack of like transportation system, like in at some time we can't able to get any bus or something? Ever you heard about it कि बस नहीं मिल रहा है, सामान नहीं पहुंच पा रहा है? होता है ये चीज? कभी गांव गए हो, रोड देखा है बहुत खराब है, टेकर पे बैठ के गए हो? यस मैम गए हैं, कम और ट्रांसपोर्टेशन खराब भी है और एक चीज एक्स्ट्रा क्राउडेड है. When you will go with bus, you will see that so many people are even sitting on the roof of the bus. Reason is that there is a lack of transportation and crowd is too much, right? And they know that after missing this bus, maybe they will not get after, maybe they will get it after 4 or 5 hours. Is it true or not? Yes. It's totally depend upon the village that where you are basically living. So in remote areas, there is still the problem of transportation. The people there, even people के transportation में भी service and goods के transportation में भी problem है. Clear है? Second point. Communication. Like Jio started working that they reached the remote areas also. You know about it? Who are the basically competitor? Airtel and Jio, everyone knows. Yes, Lekin yes. what was the basic reason that Jio are more famous? The reason that they want to reach those places also where the other communication towers are not available, right? Is it true? Yes. But still, what do you think? They are successful in that or not? Not in proper way, we can say. And there are so many problems. The communication which is related with phone, the communication which is related with normal talks. Like 18 recognized language है India में, लेकिन in villages if we'll find in India में मानो अगर it's more than 1800. Normally it's more than, I'm saying that it's more than 1800 languages actually. It's more than that. But normally I am saying, just think about it कि अब बिहार में हम language ले लें, तो in so many villages, someone are speaking Mathi, someone is speaking Mathli. So it's very much, there are lots of difference between that. इतने languages होने की वजह से communication जो होता है, there is a communication gaps. अगर लोगों को local language बोलना नहीं आता है, तो लोग अपने product को sale भी करने में उनको क्या होती है? दिक्कत होती है. तो there is communication gap भी है, proper communication system available नहीं है. That is the also reason of the lack of rural backwardness of rural market. ठीक है? जो प्रॉब्लम्स है, ये दूसरी प्रॉब्लम समझ आ गई. थर्ड प्रॉब्लम, राइट? थर्ड प्रॉब्लम, lack of availability of appropriate media. Let me tell you कि मीडिया जो आपकी है वो रिमोट एरिया तक लगभग 30% ही पहुंच पाती है, वो भी जैसे तैसे. समझ रहे हो? रिमोट एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, वहां पर कवरेज करने के लिए भी मीडिया अवेलेबल नहीं है. आ रही बात समझ में? लगभग 30% से भी कम. और ये छोड़ो, न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो ओनली हिंदी न्यूज़पेपर का मान सकती हूँ मैं मार्केट होगा, बट इंग्लिश न्यूज़पेपर तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है. Because they are illiterate, and if some peoples are literate, maybe they are able to speak in Hindi or local languages. ठीक है? लोकल लैंग्वेजेस ही समझ आता है वो. So the media अगर वहां पहुंचती भी है तो बहुत कम कवरेज है, लगभग 30% तक ही बस मीडिया कहां तक पहुंचती है? विलेजेस तक, वो भी रिमोट एरियाज तक. इसीलिए मे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी तक बाहर आई भी नहीं है कि रूरल एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. चौथा लिखो, फोर्थ, वेयर हाउसिंग. As we all know that the consumers of rural areas are basically dependent upon the farming, but there is lack of warehousing and logistic system. आइए, warehouse क्या होता है? For storing the food products, grains. कई बार उनके पास proper अभी भी नहीं है. Central Authority of Warehousing basically they are deciding
डिसाइड वो कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पे दे जस्ट वांट टू मेक वेयर हाउसेस, दे वांट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हर एरियाज में स्टिल अभी भी पहुंच नहीं पा रहा है। व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला बताया था ना, लगभग 14,700 में आज भी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, समझ रहे हो? तो जब इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक चीज नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट द वेयर हाउसेस। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनके जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे तैसे रेट में, या वी कैन से इन द मिनिमम प्राइस दे नीड टू सेल इट, बिकॉज सीजनल है, कुछ प्रोडक्ट सीजनल होता है बट उसकी डिमांड ओवरऑल मार्केट में हमेशा होती है। फॉर एग्जांपल कैरेट, पता होगा कि ठंड में कैरेट होती है, पता है ना, इन विंटर विल गेट, बेसिकली फार्मिंग ठंड में होती है, लेकिन कैरेट आपको ऑल द टाइम अवेलेबल मिलता है ना, व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्टोरेज सिस्टम। बट लेकिन ये चीज, ये फैसिलिटी अर्बन एरियाज में पॉसिबल है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द रूरल एरियाज, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ वेयर हाउसेस। वो अपने फूड्स को बेसिकली स्टोर कर ही नहीं सकते हैं, और अपने वो ऑलरेडी इतने पुअर होते हैं कि उनके पास इतनी परचेजिंग पावर हाई है ही नहीं कि वो खुद से अपना कोई प्राइवेट स्टोरेज को वो अफोर्ड कर पाए। इसलिए ना ही प्राइवेट सेक्टर वहां पर जाता है कोई वेयर हाउस ओपन करने के लिए, ना ही गवर्नमेंट प्रॉपर्ली पहुंच पा रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विलेज स्ट्रक्चर इन इंडिया। विलेज स्ट्रक्चर इन इंडिया, विलेज स्ट्रक्चर इन इंडिया। You know that in India the villages are scattered. कहीं भी एक जगह पे आपको विलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? Why? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि in India there are lot of diversification in the states only. Just think about it. And within the states there are districts. There are the lots of villages comes under the district areas. तो हर एक स्टेट में लगभग आप मान लो एक बहुत सारे विलेजेस हैं, और हर जगह के जो विलेज को आप फोकस करना इज वेरी मच इम्पॉसिबल। कुछ विलेजेस इतने छोटे हैं, सम विलेजेस आर टू स्मॉल, जिनकी पॉपुलेशन 1000 लोगों से भी कम है, 1000 लोगों से भी जस्ट कम है। सोच के देखो, दे आर वेरी स्मॉल विलेजेस, and this is your homework to write names of 5 villages whose population is less than 1000. Just write it, it's your homework. And if you will not find it, then I will let you know. There are 60% villages. हाँ तो लिखो, राइट 70% पॉपुलेशन तो इंडिया में रहता ही है ऐसा कि जो विलेजेस एरिया या रूरल एरियाज में रहता है। I am just talking about some villages whose population is even less than 1000. मेजॉरिटी होंगे, लेकिन लिखो 5 विलेजेस लिखो। अच्छा एक काम करो, above 1000 वाले लिख लो, ठीक है? 1000 वाले तो बहुत सारे हैं, above 1000 वाले लिख लो जिसका पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा हो। क्लियर हो गया ना? लिख लो क्या? नेक्स्ट, अब जब 1000 से भी कम पॉपुलेशन है, समझो कि अगर 1000 से भी कम पॉपुलेशन है तो उस एक पर्टिकुलर एरियाज के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना इफिशिएंट होगा क्या? बिकॉज वी ऑल नो कि वट एवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यू विल मेक, वी कांट कंपेल द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते कि भाई वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदे, मार्केट से वो प्रोडक्ट को ले। पॉसिबिलिटीज तो है नहीं ये चीज की। आपने कि स्पेशली मार्केट, आपने टाइम लगाया, कॉस्ट लगाया, रिसर्च किया, स्ट्रैटेजी बनाया, एंड इफ इट विल बी नॉट सक्सेसफुल, then the company will be in loss. So because of this reason also, so many companies don't want to focus on some villages, right? Because of the population criteria and the village structure. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्या बैकवर्डनेस का, कि बहुत सारी कंपनी except ITC, Unilever and Dabur and some companies which are basically nowadays focusing, जो फोकस कर रहा है, किस पे फोकस कर रहा है बेसिकली आजकल? वो रूरल एरियाज पे, वो रूरल कंज्यूमर्स का पोटेंशियल कंज्यूमर मान रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट ऑफर भी कर रहा है बेसिकली वो होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक है। सोचा है कभी? बिस्किट्स, ऑयल, बेसिक नीड्स वाली चीजें वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर कोई कंपनी है, अगर उसे ऑटोमोबाइल बनाना है रूरल एरियाज से, सबसे पहले तो पोटेंशियल कस्टमर ही उसे अवेलेबल नहीं होगा, उसके बाद भी इतना कम पॉपुलेशन रहेगा, इतने छोटे छोटे एरियाज या पर्टिकुलर सब विलेजेस पे आप फोकस नहीं कर सकते। या तो आप एक पूरा होमोजेनस ग्रुप ले लोगे, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन के सारे गांव को लोगे, लेकिन एक विलेज पे क्या फोकस किया जा सकता है ना? तो ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे गांव जो है आज भी, विलेजेस आज भी बेसिकली अपलिफ्टमेंट की जगह बेसिकली वो डाउन की ओर जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट,
Rural marketing and sales management. Rural marketing and sales management. Rural marketing and sales management. अच्छा, what is comes under the sales? Sales management क्या होता है? What is the meaning of selling the product? Ever you heard about this concept? सुना ही होगा. सुना है? रूरल मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फोकस है कि भाई ठीक है, अगर हम रूरल कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी नीड टू मेक फर्स्ट वी नीड टू रिसर्च. बट इससे अर्लियर जो मैंने पॉइंट पे बात किया था, क्या था वो? स्कैटर्ड विलेज जो है स्कैटर्ड लेवल पे है ना. इसमें आपको जो मैनेजमेंट बनाना होगा, अगर आप रूरल एरियाज को फोकस करते हो तो सबसे पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पहली बात, द कंज्यूमर्स ऑफ रूरल एरियाज आर वेरी मच ट्रेडिशनल. their beliefs and customs are very much orthodox. हो सकता है कि अगर आप कुछ गुड्स बनाते हैं और अगर आप उसे सेल करना भी चाह रहे हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मान लो एनर्जी ड्रिंक बना रहे हो, आप अगर एनर्जी ड्रिंक सेल करने जाओगे किसी रूरल मार्केट में तो आप श्योर हो क्या कि वो खरीद लेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वो उनकी बिलीफ ये होगी कि हम एनर्जी ड्रिंक क्यों पिए, हम तो ऑलरेडी क्या है, पावरफुल है, हम सत्तू पी सकते हैं, हम कुछ और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, हम धरती से जुड़े हुए लोग हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट इट ना. तो मे बी आपकी एनर्जी ड्रिंक का सेल ही ना हो और वो आप पे बिलीव ही ना करे. सो इसीलिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते कैसे हो, हाउ यू विल इन्फ्लुएंस देम एंड दे आर गोइंग टू बिलीव ऑन यू और नॉट. ठीक है. पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट एज सच कुछ चीजों में, जैसे वैक्सीनेशन में, सैनिटरी पैड्स वगैरह, मैंने बताया था कि लास्ट की उन लोगों ने कुछ ड्राइव चलाया था, सोशल ड्राइव, जिसमें उन्होंने घर घर जाके वुमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था. लेकिन पर्सनल सेलिंग 100% सक्सेसफुल कभी नहीं होता है. रीजन इज द लैक ऑफ लैंग्वेजेस. लैंग्वेज नहीं आता, वहां की लोकल लैंग्वेज की कमी है, समझा नहीं पाओगे, उनकी बिलीफ बहुत अलग होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर्स होते हैं, वो आपकी बात मानेंगे भी नहीं. सेल्स मैनेजमेंट जो है वहां का, अगर वो नीचे गया, अगर वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाया तो डेफिनेटली धीरे धीरे मार्केटिंग क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना वो कम कर देंगे, बंद कर देंगे. समझ में आ रही बात? तो ये भी एक रीजन है क्या, बैकवर्डनेस का, कि लैक ऑफ प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन द रूरल मार्केट. क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट. ब्रांडिंग. अच्छा, what do you think that all the rural consumers are of the same mind? No. Do you think it maybe there is some heterogeneity available in their mind? They are heterogeneous little bit. Some people are like, maybe they are aware about some products because of the communication, like television ke through they just understand that this is a Lakme product, this is for these are beauty products, like for example these are the books, right? They understand through media maybe. लेकिन they are not aware that which one is original and which one is duplicate. Is it true or not? Yes. Because of the illiteracy, maybe just they will identify, yeah, this is the packet of Lakme, but that is not. And you all know that for purchasing a single kajal of Lakme, at least you have to pay 200 rupees, and we all know that their purchasing power is less. And if someone will say that this is the Lakme kajal, but you need to pay only 20 rupees for this, what they will think? That maybe some government initiative came and they are just providing all the product in the less cost. But is it? That is not true. Basically, these kinds of companies who are making the pirated product, or they are basically making duplicate product of brands, they are basically focusing on those people whom they know that they are not able to understand. They can't differentiate between the real and the fake products, right? So basically वैसी कंपनीज ज्यादातर ये काम कर रही है कि वो क्या करती है, फेक प्रोडक्ट्स किसको प्रोवाइड कर देती है, रूरल एरियाज को. पैकेजिंग सेम ही होता है लगभग, और वो बेसिकली अनअवेयरनेस होता है, इलिटरेसी होता है, लोगों को बस क्या होता है, बस आईज से जो कलर्स वगैरह दिख रहा है उसे आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया. तो ये सारे रूरल मार्केट्स की मैं प्रॉब्लम लिखवा रही हूँ कि रूरल मार्केट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है. इसीलिए पायरेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह का सेल अगर वहां होगा भी तो पायरेटेड प्रोडक्ट्स ज्यादातर सेल हो जाता है. क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट पॉइंट, पैकेजिंग. अगर कोई प्रोडक्ट
इन रूरल एरियाज में भी बहुत लेस हो, ना ही के बराबर हो। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप ओट्स बनाते हो या कोई भी चीज है, कॉर्नफ्लेक्स ले लो, अगर आप रूरल विलेज तक प्रोवाइड करोगे तो यू नो कि इन दैट केस लेबलिंग वगैरह कैसा होगा, इंग्लिश में या कुछ प्रोडक्ट में हिंदी में, किस तरीके से यूज करना है बता सकते हो। लेकिन जिन लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है, वो क्या उसके पैकेजिंग से अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट को खरीदेंगे? ऑलरेडी तो फेक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। और अगर वो कुछ नया प्रोडक्ट खरीदेंगे, if they want to consume it and they have no idea that how to use it because they can't able to read it because they know कि how to speak local language but illiteracy ज्यादा, unawareness ज्यादा है, तो हो सकता है कि लेबलिंग वो समझ ही ना पाए कि उसको यूज कैसे करना है। इज इट पॉसिबल और नॉट? सो पैकेजिंग में भी रूरल मार्केट में प्रॉब्लम होता है कि हाउ टू मेक पैकेट्स to sell this to the rural consumer. This is also the reason. How to do labeling, labeling कैसे करना है, how to differentiate it with the fake product, and even there are so many initiatives are already taken that this is the basically brand identity of this company, but they are not aware about it. So the overall reason of these blackness are poverty, unemployment, unawareness and illiteracy. We can say that, कह सकते हैं ये? क्लियर है? अच्छा बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट? Anyone have any doubt in this? कोई भी डाउट है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, if you want to make some product for the rural consumer, how you are going to target them? Anyone? Abhijit? Everything is okay? You are fine? Tell me. I don't know. You don't know? If you are going to make any product, what kind of product you are going to make for rural consumers and how you will sell it in the market? First thing, the observation of the rural market is the basic thing, and since the market is rural market is Scattered. scattered, and so there are very less competition in the market. Yeah. Because there are some companies only basically which are working to provide goods to the rural market, like ITC, HUL, Hindustan Unilever, very less companies. Very less competition, and the segmentation of market is like that. If the one store of clothes is there, then the other store will be of another thing. The second store will be none of the same thing. And Basically, in which product you want to basically deal in the rural market? If you will go to the rural market, just think about that you will get one land and you just need to start one shop there. What kind of product you want to sell there? nowadays, basically, it is the FMCG products. FMCG product, yes, obviously because they are basically dependent upon the need-based product. They are not going to purchase a very much luxurious product, and if they want to purchase this, they are just migrated toward the urban area or district area and they purchase it from there. But the basically because all the customers are not potential customers, right? There are very less people there that who are going to purchase a luxurious product. So you will just deal with the FMCG product. Okay? So what kind of product in FMCG? FMCG is a day. They are FMCG already daily needs product. Daily needs product like chicken, milk, bread, all these things. Okay. You will just going to deal with that. And what about the price policy? What kind of policy you are going to opt there? The pricing policy is basically they are the cost of production that is determined. The pricing policy is set as the cost of production. Yes, sir. And when the So you are going to charge cost plus pricing strategy. Like you will just put 10 rupees, like this is the cost price, but you will work as a retailer. Maybe you will get it from the another industry manufacturing unit. Then after that, how you will say? You will take less margin or more margin? rural market man has less margin is about. इसी के रूरल मार्केट में आपको लेस मार्जिन डिस्प्ले स्टोर्स